हेलो फ्रेंड्स, अमित पोपली दिस साइड। दोस्तों, ये वीडियो है आप सबको गुड विशेस देने के लिए फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड एक बात का ध्यान रखना, ज़्यादा प्रेशर एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल मत लेना। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप जानते हैं कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा प्लेयर रहा हूँ। आप सबने क्लासेस में या फिर यूट्यूब क्लासेस में भी एग्जाम्पल्स के थ्रू सुना है ये सब बातें। अब पता है, कई बार ऐसा होता था कि इतना ज़बरदस्त क्रिकेट प्लेयर होने के बावजूद भी कई बार नेट प्रैक्टिस जब कर रहे होते थे ना, तो चौके पे चौके, छक्कों पे छक्के लगाते थे, मैदान के अंदर जीरो पे आउट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि मैच का प्रेशर होता था और नेट प्रैक्टिस में तो प्रेशर नहीं होता था, तो इसलिए खुले होके खेलते थे। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो मैच का प्रेशर होता है ना, उसको दिमाग पे कम से कम रखना। यहाँ पर जितना ज़्यादा लोड कम रखोगे, जितने ज़्यादा फ्री होके जाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम होगा। हालांकि ये मेरे लिए कहना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट भी कोरोना का इन्वायरमेंट है और फिर एग्ज़ाम का प्रेशर है। मैं जानता हूँ मेरे लिए काफ़ी आसान होगा ये कहना, और बहुत मुश्किल होता है ये करना, बट स्टिल दोस्तों ध्यान रखना, जितना यहाँ पर प्रेशर कम होगा उतना अच्छा परफॉर्म आप एग्जाम में करोगे। और उसके लिए एक सक्सेस मंत्र केवल मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वो ये कि एग्जाम से पहले कम से कम 6 घंटे की नींद आपने जरूर करनी है। ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर यह कम प्रेशर रहेगा, कम से कम 6 घंटे की नींद। Hey guys, what's up? This is CS Sachin Gupta. I wish you a very good luck for the upcoming November CA 2020 exams on behalf of entire team of Unacademy. Do your best, give your best, all the best. Chakte fatte. Remember, my dear friends, the belief that you hold in the beginning of the journey will define your journey. So have the belief that yes, I can, and you will do well in exams. All the very best wishes to you all. Thank you. Hello everybody, I on behalf of Unacademy team members and the staff members and the faculty members, we all combined together wish you best of luck for your upcoming November CA examination. Hopefully you'll come out with the flying colors. आप लोगों ने पिछले एक साल में जो मेंटल प्रेशर सस्टेन किया है, अब उस मेंटल प्रेशर को सस्टेन कुछ और दिनों के लिए करके परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज एंड कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स. Mind it, your parents are waiting for you to become a chartered accountant. ये लाइन हमेशा ध्यान में रखेगा and that will give you a good motivation to perform good in the examination. Best of luck to all of you. Hey guys, good morning to all of you. Guys, let me start with one thing, that you all are the best guys. Guys, believe in yourself that you can do it. Guys, why am I here today is I want to discuss a little bit of a plan for a day before the examination. CA Inter Group 1 accounts paper. Guys, your first paper is accounts always, and a day before that, what are you gonna do? So guys, my suggestion is that on that day, start early. Not early means 4 or 5 in the morning, because I know guys you sleep late at night. So start at 8 in the morning, and please manage proper 8 hours of sleep guys, okay? 6 to 8 hours, okay? Not less than 6 hours. Start at 8 in the morning, and guys, revise every damn chapter in your curriculum, every damn chapter on that one day. Now definitely you will ask me, sir, how can we do all the chapters? So guys, you're not required to do a lot of questions, right? I want you to solve 2 questions, 3 questions from every chapter, and solve it with your pen, with your calci, with your notepad on. Guys, the order in which the chapter should be revised is posted along with this video on the notes. You can just check that. Guys, maintain proper food habits, don't try to overeat yourself, and don't eat junk, don't eat too much of sauce and all that stuff. So please be clear, okay? And guys, what am I bringing you for you is that a day before the paper I will be with you for the whole day. Yes guys, you are listening it correct. I will start my revision sessions on Unacademy at morning 8 o'clock, and guys, I have scheduled like 2-hour revision sessions at little bit of 10-minute of break, 15-minute of break, and again getting back to it. So guys, this way the whole day we are gonna be together and revise every damn chapter, solve couple of questions from every damn chapter. Are we clear with that one guys? We are gonna rock tomorrow. One more thing before I close it down is, guys, have an attitude now that writing a paper is fun. It's a kind of
adrenaline bursting kind of activity, guys. It's fun, it's adventure. And guys, don't be panic in the mode, don't try to shy away from the examination. Don't try to take too much of tension. It's gonna be fun tomorrow. So let's crack it together. Thank you, guys.